Hi guys, welcome to Ayurvedic Hub. So today we are discussing one of the very important topic of Rasa Shastra, and that is FSSAI, because ये 5 मार्क का टॉपिक है एंड हमारे सिलेबस में गिवन है एंड ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बारी. सो इसीलिए हम इस टॉपिक को जल्दी से आज डिस्कस करेंगे एंड इसको लाइक ऑब्वियसली शॉर्ट में देखेंगे कि हम इफ़ 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है हमारे एग्जाम में, बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन योर 5 मार्क. सो इफ़ अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक दैट इज़ FSSAI, that is the full form is Food Safety and Standards Authority of India. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि फुल फॉर्म तो सबको आनी चाहिए, बिकॉज आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यू बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो द फुल फॉर्म इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो एज द नेम सजेस्ट कि इसमें फूड की सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर एनी पर्टिकुलर फूड आइटम, वो सब इसमें डिस्कस किया जाएगा कि फूड सेफ्टी क्या है, व्हाट इज़ फूड सेफ्टी, मतलब व्हाट इज़ सेफ फॉर द कंज्यूमर्स, ओके, एंड व्हाट आर द मेन स्टैंडर्ड्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर एनी food item, for any particular food item. So this will, in this we will deal with the food safety and the standards. So this is FSSAI. So it was established under the Food Safety and Standards 2006. FSSAI is an autonomous statutory body established under the Ministry of Health and Family Welfare. So this is important कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये developed है. So it is under the Ministry of Health and Family Welfare that governs, regulates and monitors the food business in India. So what it does, it governs the food business in India and it is under the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है ना. तो ये इसका important point हो गया. Then moving further, the only food regulatory body of India, it is the only food regulatory body of India and it also aims in the capacity building programs, ensure proper quality checks and safety procedures. अब मैंने आपको बोला ना कि standards and safety is the main work, so it ensures the proper quality check and the safety procedures, thereby curbing the food adulteration. Obviously adulteration को ये avoid करवाएगा and sale of substandard products. अगर कोई भी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से लाइक लोअर स्टैंडर्ड्स का है तो ये उसकी सेल पे मतलब एक काइंड ऑफ लिमिटेशन लगाता है, ओके ना. सो इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स. So then we have multiple rules, multiple orders that were combined in the FSSAI, the Prevention of Food Adulteration Act, Meat Food Products Order, Vegetable Oil Product Control Order, Edible Oil Packaging, then Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour, Milk and the Milk Products Order, and any other order issued under the Essential Commodities Act. So these were combined in the FSSAI. It is headed by a non-executive chairperson that has 22 members. मतलब 22 members का एक head होता है, that is a non-executive chairperson that is appointed by the central government. Obviously the person is appointed by the central government और वो person क्या होगा, either holding or has held the position of not below the rank of secretary to the government of India. So this is the criteria, this is the general requirement कि वो जो chairperson होगा वो एक रैंक ऑफ सेक्रेटरी की पोजीशन से नीचे का नहीं होना चाहिए. सो दैट पर्सन शुड ईदर होल्डिंग और हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट उस चेयरपर्सन के लिए. ठीक है. देन इसके हेडक्वार्टर्स, इट हैज़ लाइक 6 रीजनल ऑफिसेस एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है. देन इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं. नॉर्थ में इट इज़ इन दिल्ली, ईस्ट में इट इज़ इन कोलकाता, चेन्नई में है, कोचिन में है, गुवाहाटी में है एंड मुंबई में. तो 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इन सारी प्लेसेस पर. ये 6 रीजनल ऑफिसेस हैं FSSAI के, ओके, एंड द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यू दिल्ली. देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FSSAI हमने जान लिया, मतलब व्हाट इज़ इट, इसका क्या काम है एंड ऑल्सो कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको फेवर करती है एंड व्हाट आर द रूल्स एंड हाउ इट इज़ गवर्न, इसके हेड ऑफिस हेड क्वार्टर्स किधर है. आफ्टर दैट द मेन थिंग दैट इज़ फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FSSAI. व्हाट इज इट? टू कंसोलिडेट मल्टीपल लॉज
and establish single point reference system. To establish Food Safety and Standards Authority. Obviously, it has to establish the Food Safety and Food Standards Authority to regulate the manufacture, storage, distribution, sale and import of food products. So how it is done? So वो सब कुछ objectives of FSSAI में आएगा. To ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Obviously, the main objective जो कि आपको उसके name से ही समझ आएगा, to ensure the availability of safe and wholesome food for human consumption. Human consumption के लिए जो food है that should be safe and wholesome. ठीक है? Then you have the power and functions कि क्या है इसके powers. Framing of regulation to lay down food safety standards. Obviously, it can frame the regulations for that. Laying down guidelines for accreditation of laboratories for food safety testing. It can lay down the guidelines for the laboratories that tests the food safety. Then providing scientific advice and technical support to government, contributing to the development of international technical standards, and it is accepted globally. Then they have to collect data regarding food, contamination, degradation, consumption and adulteration. They have this power and the control. उनके function में और उनकी power में ये है कि वो data collect कर सकते हैं. They have to collect the data, collecting data regarding food contamination, degradation, consumption and adulteration. Why am I focusing on this point? Because ये आपको easily learn रहेगा. Then awareness, information about the food safety and nutrition. You must have seen that FSSAI logo like this behind the whatever food item you buy, food product you buy, उसके पीछे FSSAI का लेबल होता है. That means कि वो आपका FSSAI उन्होंने मतलब जो बॉडी है FSSAI उन्होंने उसको रेगुलेट किया हुआ है, मतलब कि that is safe for our consumption. You must have seen the logo and this is the logo. Obviously you all have seen this behind all the food products that you buy. Then the departments, इसके 10 important departments हैं. Import division, regulatory compliance, R&D, research and development, risk assessment, information, education, communication, IEC, regulation and codex, quality assurance and HR division. So these are the departments. Then research and quality assurance. FSSAI modified laboratories, they are known as national ABL, that are 112. State labs are 72 and the referral are 14. अब obviously there has to be FSSAI license. किसके लिए मैंडेटरी होगा? मैंडेटरी फॉर ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द एनुअल टर्नओवर. अब जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं ना, उनके लिए FSSAI लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो अपने प्रोडक्ट के पीछे FSSAI का मार्क लगवा पा रहे हैं, इफ़ दे आर बीइंग एबल टू डू दैट, इफ़ दे आर एलिजिबल फॉर दैट, एंड हाउ विल दे बी एलिजिबल? अगर उनके पास FSSAI का लाइसेंस होगा. एंड FSSAI का लाइसेंस कैसे होगा? जब FSSAI ने उनका सब कुछ सर्वे कर लिया होगा एंड सब कुछ उनका चेक कर लिया होगा कि देयर फूड इज़ good for our consumption, it is healthy for human consumption. So उनको तभी FSSAI का लाइसेंस मिलेगा. हमने GMP में भी देखा था कि GMP का लाइसेंस भी उसी को मिलेगा जिसने सारी कंडीशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करी होगी. सो उनके एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस मिलता है. वो कैसे? बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन दैट इज लेस देन 12 लाख पर एनम. स्टेट FSSAI लाइसेंस मिलेगा बिटवीन 12 लाख टू 20 करोड़ जिसका इनकम होगा. एंड सेंट्रल FSSAI लाइसेंस लेना होगा उन्हें जिनकी इनकम मोर देन 20 करोड़ होगी. आफ्टर दैट you have the consumer outreach. They have given you the toll free number, that is this, and online platform is food safety voice. यहाँ पे register कर सकते हैं complaint about the food safety, labeling defects and misleading claims. So this is the consumer outreach कि consumer के लिए क्या चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं. So this was all about FSSAI and मैंने जैसे आपको बोला था कि एक छोटा सा टॉपिक है and 5 मार्क में it is given. So इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था but बहुत छोटा टॉपिक है, लिमिटेड चीज़ें you have to study. अब मैंने आपको ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उससे यू कैन सी कि आपको क्या लर्न रखना है. अब जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम में. यू कैन जस्ट टेल देम कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये, क्या उनका मेन वर्क है. देन यू कैन टेल अबाउट द हेडक्वार्टर्स, देन यू कैन टेल अबाउट दिस चेयरपर्सन, देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट, देन पावर्स एंड फंक्शन, सम ऑफ द पावर्स, देन यू कैन टेल अबाउट द लाइसेंस पार्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द मेन थिंग जो कि आप इसमें लर्न कर सकते हो, जो अपने एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर. We will again meet in the next lecture with another important topic that is very important and obviously very छोटा सा topic and जो हमसे miss हो जाता है. So bye bye guys, stay tuned for the next video lecture.